So can you hear me? Yes, Noorzahrah, we can hear you. You can wait for 2 minutes. Participants are still joining. Right, sir. हाँ जी. Miss Noorzahrah, you can start your presentation as most of the participants has joined. So this slide shows the structure model, which is used to examine the relationship between latent variables. This slide shows the evaluation of coefficient of determination R square. Measures the amount of variance in the endogenous variables is explained by one or more exogenous variables. Evaluation of predictive relevance is another measure used to assess the model's predictive accuracy. This slide shows the results of hypothesis. As shown, hypothesis 1, which shows the relationship between SN, subjective norm, and behavior intention to use, is supported, and hypothesis 2, showing the relationship between subjective norm and perceived usefulness, is also supported. Hypothesis 3, hypothesis 3, which shows the relationship between computer self-efficacy and perceived ease of use. Hypothesis 3b, which shows the relationship between computer anxiety and perceived ease of use, is rejected. All other hypotheses supported. The direct relation between perceived usefulness and behavior intention to use is also supported, and perceived ease of use with
perceived ease of use, which influences behavior intention to use, is also supported. This slide shows the mediation assessment of perceived usefulness. The mediation of perceived usefulness between subjective norm and behavior intention to use and perceived ease of use and behavior intention to use are shown partial mediation. Contribution of this study is as this study adds to the body of knowledge in the field of cryptocurrency by providing a fresh perspective on the factors influencing the behavior intention of investors to use cryptocurrency. This study looks at the widely used extension of the technology acceptance model 3 to create and test an integrated model that can better anticipate investors' intentions to utilize an innovative technology such as payment in cryptocurrencies. The previous studies on factors affecting cryptocurrency usage have not applied to TAM3 to examine their variables. In Pakistan, KP government is going to build 2 hydroelectric power pilot cryptocurrency mining firms to capitalize on a bullish global cryptocurrency market. The State Bank of Pakistan plans to introduce a digital currency by 2025. This study has provided quantitative rigor to investors' knowledge of cryptocurrencies and why people use them. This research aims to provide insight into cryptocurrency practically to express intention to use cryptocurrency payment. The results of this study may contribute a lot for the government, bankers, and investors in the advancement of cryptocurrency as the factors critical to its adoption have been discussed. Recommendations are risk-free cryptocurrency should be a primary requirement and might have a significant competitive advantage compared to the present offers. Cryptocurrency must develop into a high value-added service for clients requiring significant market efforts. The presence of widely agreed operating standards as well as easy access to a support office. Assalamu alaikum, Ms. Noor. Sorry for the interruption, but we would like you to move faster. In the event of the wind up as problem, soon as possible. Right. So here are some limitations. Punjab province of the Pakistan is used for data collection and long-term sustainability of cryptocurrency and Bitcoin mining is another concern for future studies. And as cryptocurrency is developing as a new technology in the financial market, so in future longitudinal studies should thus track the rise of cryptocurrency acceptability. If we conclude this paper, we can say that cryptocurrency is the desire of the time. So the government and the bankers are going to fast their transactions and secure and traceability and traceability is the main point of cryptocurrency adoption. Moreover, the study showed positive results as mentioned above that all the hypotheses except one is accepted. Thank you, sir. Sir, hold you. Thank you so much, Ms. Noor. If anyone has any questions, I'll give you 2 minutes for that.
I think there are no questions. So, Ms. Noor, you can stop the screen share, please. So now I would like to invite Rana Muhammad Zahid Hafeez to present his paper entitled Adoption and Acceptance of Financial Technology, FinTech Banking Services by Pakistani Users, an extension of Unified Theory of Acceptance and Use of Technology Model and the Theory of Planned Behavior. Mr. Rana Muhammad Zahid Hafeez, please present your paper. Alaikum salam, sir. Thank you so much, sir, for inviting to me. Sir, I'm sharing. So currently, sir, मुझे screen share का option दिया जाए, sir. You hear me? Hello. I think you can share your screen now because Ms. Noor just ended her screen share. जी, sir. Assalamu alaikum, sir. Myself Zahid. I am working on adoption and acceptance of financial technology on the basis of FinTech by the using of services by the Pakistan user and extensions of the unified theory of acceptance and planned behavior, use of technology model and I'm really thankful to Dr. Owais Shafique, Dr. Imran, and also Muhammad Saqib Aslam, and further move on to the topic. First of all, I will share some concept about the topic in which research we Mr. Zahid, I should update you that we would like you to finish within 10 to 15 minutes, please. Yeah, we are sure, on a sure, tight schedule, please. Thank you. Inshallah, inshallah. So I'm starting with the first of all, I'm sharing with you some concepts of the FinTech adoption. First of all, I give some suggestions about the thesis and content tables, in which 5 main factors in which discuss in which introduction. First of all, we deal with the poverty and also uses of the banking and financial technologies for the modification of the new innovations and the new facilities for the customers and stakeholders. In theory, literature, and hypothesis. In literature review, first of all, I will discuss about the previous papers and previous researchers who work on the FinTech adoption. Mostly, some researches which रिसेंटली जो रिसर्चेज हैं सर उसके अंदर माइक्रो क्रेडिट फाइनेंस पे बहुत काम हुआ, बहुत से एग्रीकल्चर सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, बट सर मोस्टली जो है इस आउटलाइन के थ्रू हमारा जो फिनटेक अडॉप्शन और इनके जो वेरिएबल्स है जो डायरेक्ट जो है वो कभी भी सर कैलकुलेट नहीं किए गए थे। और बेसिकली इसके अंदर टेक्नोलॉजी के मुताबिक सर एक तो यूनिफाइड थ्योरी ऑफ एक्सेप्टेंस एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी यूज की गई, उसके बाद थ्योरी ऑफ प्लान बिहेवियर यूज की गई, और सर इसके अंदर सर्च मेथोडोलॉजी बेसिकली क्वेश्चनर के थ्रू डाटा कलेक्शन की गई, और डाटा कलेक्शन के अंदर सर हमारी सैंपल साइज जो था वो 358 था, और डिफरेंट क्लस्टर सैंपल के थ्रू जो था डाटा कलेक्शन की गई। और फर्दर सर मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना चाहूँगा। बेसिकली इंट्रोडक्शन में अंदर मैं ये बताना चाहूँगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे सर टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, इसके लिए हमें स्पेशली जो था कि हमें अपने हमारे जितने भी सर इन्वायरमेंट फैक्टर्स हैं उसके अंदर जो है टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत डेवलप, जैसे जैसे सर टेक्नोलॉजी इन्हांस करेगी वैसे वैसे जो है हमारा सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकेगा और डेवलप हो सकेगा। इसी तरह सर फिनटेक अडॉप्शन, फिनटेक या फिनटेक टेक्नोलॉजी बेसिकली ऐसी है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके थ्रू जो है सर इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है सर लोगों को जो है फैसिलिटेट किया जा सकता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के थ्रू। और सर इसके अंदर बहुत से प्लेटफॉर्म है, जैसे कि सर इसके अंदर टेलीविज़न है, मोबाइल फ़ोन है, रेफ्रिजरेटर है, इनके थ्रू ऐसे है कि लोगों को टारगेट किया जा सकता है और इसके अंदर हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर अवेयरनेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं सर। और फर्स्ट ऑफ ऑल सर according to my research, I find a basic finding
सिंपली के फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जो हम परफॉर्म करना चाहते हैं थ्रू दी फिनटेक अडॉप्शन, और कंप्लीटली कनेक्शन हम फाइंड करना चाह रहे हैं जी बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर्स एंड पेयर टू पेयर एंड पर्सन टू पर्सन। एंड सेकेंडली सर, the FinTech was first used in 1972. This simply defined as the financial technology used to merge bank expertise with modern management since techniques and technology. सर सिंपली इसके अंदर हम ये डेवलप कर सकते हैं कि हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंसान है सो उसी तरह बैंकिंग सेक्टर के थ्रू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज को यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स दिया जाए स्टेक होल्डर्स और कस्टमर्स के लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। इसी तरह सर फिनटेक एक्टिव डिजिटल कस्टमर्स रेशो amplified from 1 of the 7 of 1 out of 3. In other words, 33 of digitally active customers around the world should be assumed the customer of fintech further. Sir, according to previous research, 33% जो है वो इस टाइम लॉयल्टी के साथ फिनटेक इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कर रहे हैं। और इसके अलावा सर मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज लाइक चाइना, इसके अंदर 69% लोग जो हैं वो इस टाइम जो है फिनटेक अडॉप्शन के जो है थ्रू वर्केबल हैं। इंडिया के अंदर सर 52% है और रशिया के अंदर 49%। बेसिकली सर इस रिसर्च का जो मोटिवेशन था बेसिकली ये था कि हम मिस्टर जाहिद, आपकी स्लाइड्स चेंज नहीं हो रही, प्लीज अपनी स्लाइड चेंज कीजिएगा एंड बी फास्ट प्लीज, थैंक यू। सर यहाँ पर मेरे पास तो सर चेंज हो रही है जी, नाउ इट्स फाइन, नाउ इट्स फाइन। जी सर। बेसिकली सर रिसर्च मोटिवेशंस के अंदर बेसिकली हम ये है कि टेक्नोलॉजिकल, जैसे कि सर मलेशिया जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं इसके अंदर सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है। स्टेक होल्डर कस्टमर्स के लिए सर्विसेज बहुत ज़्यादा बहुत एक्सट्रीम लेवल पर जो है वो लोगों को प्रोवाइड की जा रही है। इसी तरह मेरी जो रिसर्च थी इसकी मोटिवेशन का सबसे बड़ा फाइंडिंग ये थी कि मैं अडॉप्शन बिहेवियर फाइंड करना चाह रहा था कि इसकी वजह से लोगों की लाइफ पर टेक्नोलॉजी के हिसाब से फिनटेक अडॉप्शन का बिहेवियर के ऊपर क्या इफेक्ट था थ्रू अ इनोवेशन। और previous literature also reveals that many researchers attempt to combine two or more theories. सर इसके अंदर मोस्टली मैंने जो है साइट कर दी हैं और इसके अलावा सर मैंने पेपर के अंदर भी इनको साइट कर दी। और बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई एम आल्सो डिस्कस अबाउट दैट बेसिक इन्फ्लुएंस फाइंड करना चाह रहे हैं बिहेवियरल इंटेंशन की फिनटेक अडॉप्शन की कस्टमर्स पर और स्टेक होल्डर्स पर with the use of technology model and theory of planned behavior. रिसर्च ऑब्जेक्टिव बेसिकली है कि जो हमारी अडॉप्शन है इसको बैंकिंग सेक्टर के अंदर हम अप्लाई करके स्टेक होल्डर और कस्टमर्स की ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम्स जो है वो लेना चाहते हैं। और इसके अंदर सर बेसिकली दो थ्योरीज जो मैं पहले बता चुका हूँ, यूनिफाइड थ्योरी ऑफ एक्सेप्टेंस एंड यूज ऑफ थ्योरी, कि जैसे जैसे थ्योरी के अंदर चेंज आया वैसे वैसे इसके अंदर से मोस्टली दो से ज़्यादा थ्योरी जो है वो यूज़ की गई है। इसके अलावा थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर भी यूज़ की गई है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इनहेंस हुई वैसे वैसे टेक्नोलॉजी के थ्रू थ्योरीज के अंदर भी चेंज आया तो उसके मुताबिक। और इसके अंदर सर जो हमारा एक क्वेश्चन है, क्योंकि हमारा एक डायरेक्ट पाथ है उसके अंदर कोई भी मीडिएशन या मॉडरेशन नहीं फाइंड की गई। बेसिकली हमारा मॉडल IBs टू DB जो है वो टेस्ट किया गया, उसके अंदर डिटरमिनेंट्स इन्फ्लुएंस फाइंड की गई है जी बिहेवियरल इंटेंशन की। और इसके अंदर सर बैंकिंग ऐप के थ्रू जो है वो पाकिस्तान की जो है वैल्यूएशन को मेयर किया गया। सिग्निफिकेंस बेसिकली सर ये है कि जितनी भी स्टडीज हैं मोस्टली मलेशिया, चाइना और डेवलप कंट्री में हुई हैं और किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज में ऐसा कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं थी। मोस्टली कंट्रीज ने 2 और मोर थ्योरीज को डेवलप करके फिनटेक अडॉप्शन की कंजप्शन और इसके यूजेस पे बहुत काम किया। बट सर पाकिस्तान के अंदर लैक ऑफ नॉलेज की वजह से और बहुत से लोगों को बेसिकली सर हमारे जितने भी फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं और जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर हैं इसके अंदर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से लोग बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अवेयरनेस ही नहीं, तो इसलिए सर इसको अडॉप्ट किया गया। इसके अंदर लेटेस्ट थ्योरी यूनिफाइड थ्योरी ऑफ एक्सेप्टेंस एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्लान्ड बिहेवियर को यूज करके फिनटेक अडॉप्शन की कंजप्शन।
सर इसके अंदर लिटरेचर रिव्यू के अंदर बेसिकली हमने इसके सर आईवीज को और डीवीज को एक्सप्लेन किया है। एफर्ट एक्सपेक्टेंसी है, परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेंसी है, सोशल कंपटीशन है, फैसिलिटेशन कंडीशन है और इन्वायरमेंटल कंसर्न्स है। इसके अलावा सर फर्दर जो है सब्जेक्टिव नॉर्म्स हैं, एटीट्यूड टुवर्ड्स बिहेवियर है और परसीव बिहेवियर कंट्रोल है। और सर हमारे जो है 8 हाइपोथेसिस जनरेट किए गए थे और इन 6 हाइपोथेसिस को ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट पाथ के थ्रू हमने फाइंड किया है। इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जो परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेंसी और इम्पैक्ट ऑफ परसीव बिहेवियर कंट्रोल के थ्रू जो है इन सारों का जो है बिहेवियरल इंटेंशन टू अडॉप्शन फिनटेक एप्स के थ्रू इन 8 के 8 जितने भी वेरिएबल्स हैं इनका इम्पैक्ट इनके ऊपर फाइंड किया गया है। और इसके लिए सर हमने बेसिक्स जो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है वो एसपीएसएस के थ्रू किया गया है और इसके अलावा जितना भी इसका एनालिसिस है वो एसपीएसएस के थ्रू किया गया है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या है इसके अंदर, बिहेवियरल इंटेंशन टू अडॉप्ट फिनटेक ऐप और बेसिक इसके जो 8 आईवीज हैं इनके थ्रू इनका डायरेक्ट पाथ फाइंड किया गया है सर। और सर पॉपुलेशन जो है हमारे पाकिस्तान के 18 जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं बैंक हैं उनके थ्रू जो है इनका डाटा कलेक्शन की गई है थ्रू अ क्वेश्चनर। और 900 लोगों का सर हमारा डाटा जो है वो कलेक्ट करने का डाटा कलेक्शन की है। उसके बाद सर क्लस्टर सैम्पलिंग यूज की, डिफरेंट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के थ्रू डाटा कलेक्शन जो है वो हमने 5 लिकर्ट स्केल के थ्रू कलेक्ट किया। और डाटा कलेक्शन के लिए सर हमने एसपीएसएस और स्मार्ट फिलिप्स यूज किया। ये सर मेरा स्ट्रक्चर मॉडल है जो हम पीएलएस के अंदर जो हमने सर यूज किया है। सर बेसिकली इसके अंदर सर आईवीज का डीवी के ऊपर इम्पैक्ट फाइंड किया हमने, जो मोस्टली हमारे लिए जो था एक सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप जो है इसने शो करवाया और इसकी इंटरप्रिटेशन भी की गई और ये टी टेस्ट भी रन किया गया। और बेसिकली हमारे जितने भी 8 जो वेरिएबल हाइपोथेसिस थे उनको पीएलएस के थ्रू हमने एवेल्युएट किया, जिसके अंदर सर 4 हाइपोथेसिस ऐसे जो थे जो एक्सेप्टेबल नहीं ड्यू टू पी वैल्यू और स्टैटिस्टिक्स टेस्ट टी टेस्ट। और कंक्लूजन के अंदर बेसिकली सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी सर फिनटेक अडॉप्शन है बेसिकली इसकी स्टडी से रिलेटेड हमें फर्दर इस पे काम करना चाहिए। और लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हो सकता है कि हमारे जो वेरिएबल इनसिग्निफिकेंट की तरफ गए हैं या अनसपोर्टेड की तरफ गए हैं, क्योंकि हमारे लोगों को इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। जब इनको इन्फॉर्मेशन होगी, अवेयरनेस होगी तो उससे रिलेटेड जो है वो सही से जवाब दे सकेंगे। बैंकिंग सेक्टर में सर मोस्टली हमें यही प्रॉब्लम होती है कि बेसिकली वो फाइनेंस से डिस्कस कर रहे होते हैं बट फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी ड्यू विद द पैसेज ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे बैंकिंग सेक्टर के अंदर टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट होना चाहिए कि एक वेल एडवांस पर्सन जो है उसके ऊपर वर्केबल हो और टर्मिनोलॉजी का सही से इस्तेमाल करे। और रिगार्डिंग फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के मुताबिक उसको काम करना चाहिए। और बेसिकली मेरी लिमिटेशंस ये हैं कि बहुत ज़्यादा कम फंड्स होने की वजह से हम बहुत से कम ऐसे जहाँ से हम डाटा कलेक्शन करके एक अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं हम ये नहीं कर सकते। और इसके अलावा हम यही स्टडी पाकिस्तान पे किसी अच्छे लेवल पे करिए पाकिस्तान के लिए एक बेनिफिशियल स्टडी कर सकते हैं जिसके थ्रू हम डिफरेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट्स जो है वो ले सकते हैं। सर इसके अंदर मोस्टली 65% रिस्पोंडेंट जो थे जिनकी उम्र 26 ईयर्स ओल्ड थी। और इसके अलावा जो मोस्टली इस पॉइंट्स का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को 26-30 ईयर्स के दरमियान में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी एडवांसमेंट होगी उससे रिलेटेड बेसिकली ऐसे है कि जैसे करंट सिचुएशन में अगर कोई प्रॉब्लम फेस होती है, अगर उन्हें एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर कोई सोर्स पता होगा तो उसका सोल्यूशन ज़्यादा अच्छे तरीके से दे सकते हैं। रिकमेंडेशन सर आई रिकमेंडेड अबाउट दैट कि these the future research should be made by the removing these limitations and by the adding some other extensions by the trust state bank of regulation aware
awareness and other. I will suggest to and further do some other studies relate to fintech adoption by the collection of the data. सर मोस्टली में यही मसला होता था कि बैंकिंग सेक्टर में हमें डाटा कलेक्शन करने के लिए यही था कि हम उनसे एक प्राइवेट पर्सनल क्वेश्चन नहीं कर सकते, किस तरह के क्वेश्चन नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये बैंकिंग सेक्टर की कोई प्राइवेसी लीक होने का खदशा हो या किस तरह का मसला। सर इट्स ऑल ऑफ दिस, थैंक यू। Thank you very much, Zahid. If there are any questions, we'll give 2 minutes for that as well. So, dear participants, if you have any questions, you can ask. Yes, sir, I have a question because, sir, can I use this topic for the PhD further? Well, okay. If you think so, you can use the same topic. If you think you haven't covered certain grounds or you found another gap, you see, Yes, you didn't cover another theory, you didn't cover certain aspects that need to be covered. तो अगर कोई भी ऐसी डायमेंशन रह गई है, कोई गैप लिटरेचर में मिसिंग आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, या कोई थ्योरी इसमें से आप समझते हैं इंपॉर्टेंट थ्योरी मिस हो गई है आपसे, तो यस यू कैन डू दैट। थैंक यू सो मच। Okay, Mr. Rana Zahid, actually it is a very good study. I have one question. How you employed cluster sampling? सर बेसिकली सर 5 लिकट स्केल था कि बेसिकली सब उनको क्वेश्चनेयर फिल करवाने से पहले हमें 2 दिन पहले उनसे मिलना पड़ता था सर। बैंकिंग Okay, thank you. I have a few recommendations regarding cluster sampling. Actually, cluster sampling is based on 4 major steps. I think you should use these steps in your study, so it will improve the methodology. The first step is based on to choose the clusters. First of all, you have to choose the clusters, and in the second step, you have to select a few clusters randomly. Suppose you have selected 5 clusters, then you will choose 3 clusters randomly. After that, in third step, you have to calculate the sample size of each cluster, because the population of each cluster will not same. So definitely the sample size of each cluster will also be not same. Therefore, you will calculate the sample size of each cluster. And in fourth step, you will collect the data randomly. So I think these 4 steps are based on the cluster sampling, which must be mentioned in the methodology. Thank you. Thank you. Thank you, Rana Zahid. You can stop sharing your screen now. Thank you so much. I will Like to know if, okay, since we do not have Muhammad Faisal Shafique yet, and I haven't seen Mr. Gulfam Asif as well so far, so I'll move to the next presentations. So I think the next one is again by you, Rana Muhammad Zahid Hafeez. This one is entitled Factors Affecting the Adoption of FinTech in Pakistan based on the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology model and empirical study on financial inclusion in Pakistan. So Mr. Rana Zahid Hafeez, please present this paper and you'll have 10 minutes to present it. Thank you. Sir, he has left. He is not available. Okay, fine. Let's move on then. Okay, since 10 minutes are left, I think we should rejoin this meeting so that we'll have a 40-minute session consecutive. So just end this meeting and rejoin this link again. Thank you so much.